एस्टैब्लिश सर। ये कहाँ बैठी है? सोफी चौधरी सिंगर है, सिंगर। अरे नहीं, आपको टीवी पे देखा है, स्क्रीन पे देखा है, और हूँ बहू आप वैसे उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत हैं आप। और मस्क लगा लो। हीरो है। और हर अच्छी पिक्चर के पीछे एक बहुत बड़ा हीरो होता है, और अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी, दैट्स द डायरेक्टर ऑफ द मूवी मिस्टर प्रेम राज। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर प्रेम राज? आई सर, नाइस टू सी यू। सारे आसमान के सितारे आज यहाँ आ गए हैं रिलायंस डिजिटल में। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर लाइव, क्योंकि हमने अक्सर आपको टीवी पे देखा है, स्क्रीन पे देखा है। रियली ग्लैड टू सी यू हियर। इस मूवी के बारे में हमें कुछ बताइए। वेल, इश्क पैरिस रॉम-कॉम है, जो मेरी पेरिस में शूट की गई पिक्चर है। इसमें आप प्रीति जिंटा को देखने वाले हैं कुछ साल बाद, जो उनका फोर्टे है रॉम-कॉम। वो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी, प्यार में बिलीव कराएंगी, एंड इट्स फन। वाओ, दैट्स रियली नाइस। कितना मजा आया आपको काम करके प्रीति जिंटा के साथ, और उसके साथ साथ यहाँ पर सर हैं न्यू कमर कह रहे हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ सर के साथ काम करके, रेहान सर के साथ काम करके कितना मजा आया आपको? वेल, प्रीति इज अ लॉट ऑफ फन। मतलब आप कहीं बोर नहीं हो सकते, इतनी एनर्जेटिक, इतनी वाइवेशियस हैं, और वो हमेशा आइडिया से भरी हुई रहती हैं, तो शी कैन नेवर not be interesting to work with. She can always be interesting, and वो उसमें good producer भी हैं, so सोने पे सुहागा था मेरे लिए। Exactly, सोने पे सुहागा है। प्रीति जी ही इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, और इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगी कि रेहान सर के साथ काम करके कैसा लगा? Well, रेहान को हमने ब्रेक दिया है स्टेज दबा फर्स्ट फिल्म, एंड अच्छा लगा, सोचा है बहुत, एंड बाकी तो फिल्म रिलीज के बाद पता चला कितने लोगों से पसंद करते हैं, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, I am pretty happy that he's in the film. Okay, और यहाँ पे खूबसूरत सी हसीना सोफी जी यहाँ पे है, इनके बारे में हमें कुछ बताइए। हमने सुना है इन्होंने, अरे स्टिल दद्दू, Sophie is a friend, and Sophie is a dear friend, and इन्होंने गाना गाया इस फिल्म में, It's All About Tonight, first playback song of Sophie. Superb. And she's terrific. Long way to go, I guess. She's going to be singing a lot more songs, I believe. And French में माया है Sophie, ये बहुत कम लोगों को पता है, and हमारे लिए तो लॉटरी है। और आगे लॉटरी लगेगी, फ्रेंच में माहिर होगी। और रेहान सर, यहाँ से आप से जानना चाहेंगे कि इस मूवी में आपको सर ने ब्रेक दिया है, आपकी पहली मूवी है, कैसा फील कर रहे हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म में प्रेम और प्रीति के साथ काम करने का मौका मिला, और आशा रखता हूँ कि सबको फिल्म पसंद आएगी। थैंक यू। सर हम जानना चाहेंगे कि सर जी थोड़े डायरेक्टर साहब हमेशा ऐसे होते हैं कि बहुत खड़ूस होते हैं, आपके डायरेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? आप इन्हें देखिए, आपको क्या लगता है कहाँ से आपको? मैं तो फिदा हो गई हूँ, मैं तो उनमें फिदा हो गई हूँ, इतना यंग डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। प्रेम बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं, और वो सीन को और अपने एक्टर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। Nuance, also he understands human emotion really well. So for me as a newcomer, it was a boon to work with him, and I'm really grateful to him that he agreed to work with me. और यहाँ I think अभी हमें आवाज़ सुननी चाहिए उसकी, जिसकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है हम सब में से। So I think it's time Sophie should say something. सोफी जी मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, और वाकई आप जितनी खूबसूरत हैं और उससे कहीं ज्यादा गुना आपकी आवाज खूबसूरत है। हमने वो गाना सुना है, वी कुडंट बिलीव कि आपने गाया वो गाना। और एक्चुअली मैं हूँ सिंगर, लेकिन आई थिंक rather than you doing it, मैं ये करूँगी because she's a dear friend, the heroine and the producer of this film. Everybody, please welcome the gorgeous Viveshi's.
My dear friend, Preeti Zinta. So finally जैसे मैंने बताया था कि जन्नत से हूरों की परी आई है और ये परी इस बार साथ में इश्क इन पेरिस लाई है. Wow, that's lovely. I'm so glad. Hello, hi guys. So ये हूरों की परी यहाँ जन्नत से आ गई है और इस बार ये हूरों की परी ने क्या लाई है, इस बार ये लेकर आई है इश्क इन पेरिस. माँ बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे लिए ये आज का दिन रिमार्केबल डे है, मोस्ट मेमोरेबल डे है कि मैं आपको देख रही हूँ. Thank you, thank you. Hi, good evening, everyone. Thank you for coming here. I'm sorry I'm a bit late. I'm usually not late, but I'm sorry I got stuck in traffic, so my humble apologies. और मैडम यहाँ हमने बात की है और सभी लोगों से और हम मूवी के बारे में जानना चाहते हैं. उसके साथ साथ मुझे अभी बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है कि यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी. Wow. मैं बचपन से never wait. It's okay. मैं बचपन से आपको कॉपी करती हूँ. यू आर द इंस्पिरेशन नॉट फॉर ओनली फॉर द मी, फॉर द मिलियंस ऑफ द हियर द लेडीज. सो यहाँ पर आप इतनी हार्ड वर्किंग हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस मूवी में. एज द होल फिल्म जो शूट की गई है दैट इज इन पेरिस. सो बहुत ज्यादा ठंडी थी वहाँ पर, -20 डिग्री से भी कम. -23. -20. So have you all spoken already? Just little bit that Yes, sorry, there was a bus that broke down but stuck behind it. So what can I say that I haven't said before? It's a labor of our love. It's definitely not a thandi love story, though we might have shot it in -23 degrees. It's the first Hindi film that's ever been shot in Paris from start to finish. What else do you want to know? What I said? they would like to know how is it Sophie, you're looking really hot by the way. Yeah, every day. Okay. So, मैम यहाँ पर हम जानना चाहेंगे वर्किंग विद योर एक्सपीरियंस विद प्रेम सर के साथ काम करके कैसा? I just want to say that you know, a lot of people have asked me this. I think Ishq in Paris would never be possible, never be beautiful, never be that amazing with anybody except with Prem, because we've started this journey together. We've gone through so much together. We've laughed, we've cried, we've jumped, we've screamed, we've froze, and so I think that this was just in our destinies together. It was meant to be for Prem and I. And strangely, Preeti means love, and so does Prem. So and so does Ishq. And so that's why we made a lovely love story. Oh, that's nice. And ma'am, here I want to add on a little more about Rehan as he's a newcomer. आप इतनी senior हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको? Actually, you should be asking Rehan that. I asked. Sorry, I'm just kidding him. No, Rehan was a lot of fun to work with. He's for somebody new, Rehan is very quick on the uptake. और of course मेहनत की. You know, जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो इतनी ठंड थी और सबको ऐसा लग रहा था कि जिंदा बचेंगे या नहीं. The only positive, there were two positive things of shooting in so much cold. First positive thing ये थी कि पेरिस इतनी खूबसूरत लगी कि पेरिस इतना खूबसूरत कभी किसी फिल्म में नहीं लगी है, प्योरली बिकॉज ऑफ द कोल्ड. एंड सेकंड, रेहान ने अपने डायलॉग्स फटाफट बोले. रीटेक के लिए चांस ही नहीं वो रखता था क्योंकि इतनी ठंड थी. ये इसके रीटेक्स जब हम अंदर आ गए और सेंट्रल वार्मिंग थी, हीटिंग थी, ओनली देन रेहान डिसाइडेड टू डू सम रीटेक्स. ठंड में तो फटाफट ये
कोई डायलॉग बोलता था एंड आई वाज लाइक ओह ओके That's good. So खूब मजा आया आप लोगों को ये फिल्म बनाते हुए. That's really nice. I hope हम सब enjoy करने वाले हैं क्योंकि फिल्म की प्रोमो बहुत attractive है. पेरिस में पूरी शूट की गई है. So even we all are excited to watch this movie. और मैम here I want to know about as आप लोग Reliance Digital में आए हैं. I would like to thank Reliance Digital for giving me this golden opportunity कि हम आप सबसे मिल रहे हैं. आपको कैसा लगा Reliance Digital में आकर? Wow, it's amazing. You know, I've been waiting for this for such a long time. Sorry. Of course, it's fun to be here. It's always fun to be here. I've been on this roller coaster ride. I've been traveling. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है खुद कि मैं कहाँ से आई हूँ. All over India travel कर रही हूँ. Every day I'm interacting with the media, traveling all over the country. Every night I take a flight. Sometimes I miss the flight. Today I didn't miss the flight. But, so it's nice. I still have to go around, but we are very happy to be associated with Reliance Digital, and they have proved to be very good partners for us. Okay, here one by one, I want all of you to know. इलेक्ट्रॉनिक में से आपकी फेवरेट क्या है? अगर आपको किसी को गिफ्ट देनी हो या घर के लिए अगर कुछ बाय करना है तो क्या आप पहले प्रेफर करेंगे? First, आप Reliance Digital में आके आपको कैसा लगा? पहले वो बताइए. I've been here many times और काफी अच्छा स्टोर है इनका, and I visited this one also. So it's great. Sorry, You missed the bus. Sorry, you missed the bus. No, my favorite would be camera. Oh. I like. I've spoken as a true director. So my favorite would be that. I don't know what Rehan. He wants to be in front of that camera. That would be correct. Maybe a computer, because you can do everything with a computer. You can surf the net and you can watch movies and TV and all the programs. Acha bhai, I have everything. So what I like is the new fingerprint thing, you know, where you can open doors with a fingerprint scanner. Because I like, yeah, even I have it, but not in this one. But yeah, but I like privacy, and I like gadget kind of stuff that makes me feel like I'm some kind of spy or something. So yeah, anyhow, if you can open cupboards or you can have locks which have fingerprint scanners. Okay, what about you, ma'am? I think that the iPad is the best invention ever, especially the mini iPad. It fits perfectly into my handbag. I can read books, play games, watch videos. And the most amazing thing is I was in a hotel in Chennai, and with that iPad, you could control the entire room, the air conditioner, you could use the camera to see who's outside your door, you could unlock the door. So I think that the iPad is the most amazing invention, and you could do a gazillion. So guys, be prepared. If you want to fall in love with these beautiful chicks, you know what to do. You know, but I was just going to say, I have one big computer, I have a small computer, I have an iPad. There's so many gadgets, like, you know, and I hate the fact that you can use an iPad to open the window and shut the curtain. I hate it. I like to draw the curtains and I like to open the door because I feel with technology, you lose the personal touch, and I hate it. Any one of you, if you ever want to send me a card, please don't send me an e-card. I hate it. It makes me feel like a total loser. Why are you sending me? So too much technology, I think one no beat, no? Because there's so many gadgets now. Though I think the phone eventually is the most useful. Okay, ma'am, how was your experience here in overall here in Reliance? हाँ हम लोग कभी काम करना था. Actually, I've been to Reliance Digital, not this one, but another one, because we tied up for one of my albums, and it's always great to be here. And I love the kind of stores where you can see all kinds of books, you can see technology and everything under one roof. So it's always nice to be here. Hopefully, we'll get a chance to look around. That's nice. और here, मैम आपने इस मूवी में एक एल्बम गाया, एक गाना सॉन्ग गाया है. I request if you can sing little. I'll sing it. Preeti lip syncs the French lines. Ah oui, oui. Ah oui, oui, mon chéri, c'est une nuit à Paris. Tout est merveilleux. Oh, there's like your phone, Preeti. My phone, I put it on silent as soon as Okay, then I'll just do a couple of the French lines. So, c'est quoi l'essence de la vie? Nous avons juste aujourd'hui.
pense pas à demain, j'ai choisi mon chemin. बाहों में बाहें डाले, कर ले हम जो भी चाहे, मस्ती भरे ये पल खोने ना दे. It's all about tonight, night, night, night. It's all about tonight, night, 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 night. Tonight is going right, oh yeah. It's all about tonight. इसके लिए जोरदार तालियां. Superb. So ऑडियंस जो आप ऑलरेडी आपके प्यार में हैं, अब दोबारा प्यार में डूब जाएंगे. This is all thanks to Preeti. It's her idea कि उनको अपने गाने में कुछ international feel चाहिए था. And जैसे ही उनको एहसास हुआ और पता चला कि मैं French बोलती हूँ, ये उनका आइडिया था. So thanks to her to do something different, because it's the first time you're going to hear a song which is in French, English and Hindi, and you will see an Indian actress properly lip syncing on all 3 languages, and that in itself is very cool. We've seen Señorita, right? And when we saw Señorita, I love that song. It's great, but they had actual Spanish people lip syncing on that, and then the boys singing in Hindi. Here, Preeti's done it all. It's very cool. Very cool. Thank you, baby. And here media is waiting for a lot of questions and answers. So here media can ask questions. कौन पूछेगा? ऑडियो है ही नहीं है, पूछेगा क्या? No, don't deviate, please. You must understand, I am an actor in this film. I'm also the producer. I thoroughly respect that. I know, but please, if you respect it, last 24 hours have really shook the nation. I am still here for Ishq in Paris. It's very out of place for you. I will give you a comment later, but it's out of place for you because I'm a producer. This is my film. This is my evening as a producer. Please respect that. Thank you. Hi Preeti, Dheeraj from Aaj Tak here. Okay, you know why did you choose Paris? Paris ही क्यों चुना आपने? तमाम खूबसूरत शहर हैं इस दुनिया में. खास तौर पे पेरिस ही क्यों चुना आपने? न्यूयॉर्क में शूटिंग कर चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर चुकी हूँ, लंदन में शूटिंग कर चुकी हूँ, यूरोप में शूटिंग, स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर चुकी हूँ, इटली में शूटिंग कर चुकी हूँ, साउथ अफ्रीका में शूटिंग कर चुकी हूँ, और मैं आपको लाइन दे सकती हूँ, पर पेरिस में कभी शूटिंग नहीं की थी. 1, 2, because you know when you talk about love, just romance, Paris is a city known for 2 things: fashion and romance. And to be fashionably in love, there's no other place to be but Paris. So that's why. Yeah, Preeti, hi. This is Vikas from Sahara. आप चारों से मेरा सवाल है कि इश्क को कैसे डिफाइन करेंगे आप आपके अंदाज में? अगर इश्क को कोई डिफाइन कर सकता है तो इतनी किताबें, इतनी फिल्में, इतने गाने, इतने शेर लिखे ही नहीं जाते. आई थिंक इश्क की बात ही है कि इट्स पर्सनल, यू कांट डिफाइन इट. लेकिन जो भी है मैजिकल है. कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, उसमें हंसी है, खुशी है, रोना है, धोना है, सब है. बट एट द एंड ऑफ द डे वी कांट लिव विदाउट इट. Well, each to its own है, but I kind of मैं थोड़ा अभी चुप रहूँगा because जो सोफी ने कहा है वो actually बड़ा ज़बरदस्त कहा है, and I don't think I can better that at all, so मैं बिल्कुल compete नहीं करूँगा. Sophie is absolutely right, and I will give it to her. I think she's fantastic. Preeti, wait, there's still 4 men. Number 3 पे आएंगे. Please. Well, I think when you think that you are an ishq, you can identify a girl in a group of 100. When you are an ishq, all 100 remind you of that one girl. That's ishq for me. तो प्रीति कह सकते हैं कि इस फिल्म की कहानी जो है कहीं ना कहीं आपसे मेल खाती है. मुझे पता था ये सवाल आएगा. I knew it. जी नहीं. मेरी कहानी तो जब बनेगी तो बड़ी रॉकिंग कहानी बनेगी. Don't worry. I will need 3-part sequels in it. So no, मेरी लाइफ की कहानी से बिल्कुल नहीं है. But yes, certain incidences, yes, I won't lie about that. Certain bits. मेरी क्यों, मेरे डायरेक्टर की लाइफ से, हमारे PR रोहिणी की लाइफ से, मतलब हमने किसी को नहीं छोड़ा है. जो हमें मिला हमने उसको पकड़ के उसका कुछ ना कुछ तो डाल दिया फिल्म में. Because I think somewhere art imitates life.
And instead of taking movies, South Indian movies, or English movies or European movies, and taking from them, maybe we will do that after 4-5 films when we run out of things that we have. But we've been very true to ourselves here. Preeti, you have debuted in this movie as a producer. So what was the most challenging part being a producer? The most stressful part? Challenging? Everything is a challenge when you're a producer. Pehle to, thank God, I have good producer karma because I never troubled my producers. So isliye, some building didn't fall on our heads because everything else happened. You see, being a producer is the most thankless job because nobody comes to you unless there's a problem. And there were all kinds of problems, from bad weather, from minus 23 degrees in weather, to the cameraman coming and saying ki, of course there were issues like, oh, we have to go and shoot in the train, but guess what, the train's broken down because it's so cold. Okay, we have a day off, let's shoot in the airport the next day. Airport has gone on strike because nothing can work. Okay, let's go to the museum. The museum's heating has broken down or something has happened. And if somebody is saying the food has gone cold, our first AD is standing there and saying, ये कैसा देश है, यहाँ तो banana भी freeze हो गया है, apple भी freeze हो गया है, मतलब वो fruits भी freeze हो गए थे जो कि people were taking. फिर cameraman ने आके मुझे बोला, ma'am, the sun is not out. So I said, यार इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अगर sun is not out? But the lighting is not good, madam. I said, Manas, please, just stop it. So everything, किसी की टांग टूट जाए is an issue, किसी की flight miss हो जाए issue, बारिश हो जाए, it's an issue. So it's more of what should you say, crisis management. Okay, hi Preet. You just mentioned that you and Raj both together wrote the script. So will you continue writing the script, or what will be the next venture of Preeti Zinta's production house? And three, will you ever come to direction? First, if you all promise me to make my film a super hit, I'll write everyone's scripts. मैं तो अगले से जाके बोलूँगी, come to me, let me write your script, trust me. So I don't know about that, but I would like to write, yes. Only if something attracts me and I'm interested in it, yes. Two, what was two? What is the next venture? There is a new venture, but right now I want to just take a chill pill and relax. Because I have so much on my plate. I'm going to start a new movie, which is Bhaiya Ji Super Hit, which I start in July or August. I'm hoping it's August. And I'm so excited about it, and I really want to act in it really well because I'm not the producer. So all I have to do is just care about my hair, my makeup, my wardrobe, and just say, chai la do please, ye kar do, because it doesn't matter, if one tree falls down, it's really not my problem. So I'm just happy about that. Because when I was shooting Ishq in Paris, at one point I got so freaked out that I made this rule on set that if there's ever a problem, don't come and tell me before I'm doing some really sad news, if I'm doing a really happy scene, Tell me at night. So the production used to say, but if the problem has happened now, we need to handle it now, we can't wait till night. So I said, go to praying. So I started putting all my stress on praying that way because, it shows on my face. So I'm just happy right now doing Bhaiya Ji Super Hit. I asked, will you ever come into direction? I don't know. They say never. You never know. Maybe, who knows? But right now, no. Okay, and secondly, Secondly, मतलब सवाल दूसरा है कि आपने स्टार्टिंग में मना किया था कि आप जवाब नहीं देंगे. अगर आप अभी पूछे आईपीएल की कंट्रोवर्सी अभी नहीं. I am going to talk, guys. It's really not fair. आपके बेटे का बर्थडे होता है और साथ में किसी नेबर के बेटे का एक्सीडेंट होता है, तो क्या पूरी पार्टी आपके एक्सीडेंट डिस्कस? It's not fair, no? बस अगर आप हल्का सा Exactly. I will give you the end right now. No. ये रिएक्शन जानना चाहेंगे जैसे इश्क जो है वो कहते हैं कि फिक्स होता है, उसी तरीके से क्या लगता है आपको आईपीएल भी फिक्स होता है? Please, I request only people to ask question only related to Ishq in Paris. I have one comment to give to the media, guys. Don't be cheap. We are as much as victims of this as anybody else is. It is our money that is being played with. So I don't think it's cool to make those kind of comments, and it's very unfortunate what has happened. And I'm sure the Delhi police is on it. There are lots of people on it. That they will get to the bottom of it. But we are bigger victims than anybody else involved in it. So it's not cool.
ओके, पर आपको कहीं दुख पहुंचा है, शॉक पहुंचा है? अभी मैं यहाँ सैड सॉन्ग कर लूँ आपके लिए? अब मुझे बोल दीजिए, I can do it. You say action and pay me. Okay, thank you so much everyone. You would like to thank. टीम की मैनेजर है, आपकी एक टीम है IPL में, और IPL में Listen, there is nothing right now I have to say. There is nothing I can say. Genuinely, there is nothing I can say because I'm not Miss Know It All. I really am not. So, I am an owner, I agree. But we are as clueless like anybody else. So, what do you want me to say? Honestly, you tell me, I'll say it. We just want to know the reaction कि आपको क्या लगता है कि IPL fix है, तमाम चीजें जो तमाम controversy उड़ रही है IPL के खिलाफ, आप IPL Thank you so much. When we find out now what happens. अभी तो एक चीज निकली है. Let's follow it up. Everything doesn't have to be Speedy Gonzalez. कि अभी मैं आपको अपना पूरा वो दे दूँ and let it happen, let it come out. Let's see what happens. Because yesterday, trust my kismat, I had to do all my press in Delhi, and guess what? This whole scandal. Everyone was looking at me, and I was like, oh, okay. The whole Delhi press, there were 22 channels. I walked in for Ishq in Paris. Hi! That was my reaction. I saw all the TV screens everywhere. And I was like, oh my God, इसको आज ही निकलना था. Is this some other producer sabotaging my film or what? With all this news. So it's okay. I guess you take the good with the bad and the ugly. You know, let's wait and watch what happens. I'm also watching it on TV only, my friend. I'm not sitting in the crime branch. We'll know. Alright, thank you so much everyone for coming and joining with us here. But here I request Mr. Vinay Kawat from Reliance Digital to please come and hand over her bouquet. Please come and join it. पार्क में घूम लो। वो भी सस्ता बुक है। Okay, here I request. I want to know what happens to these flowers. Will they? Okay, or we give them, or you can give them to some hard chicks. Alright, and here I request my DJ to play the AV. DJ, can you play the AV of Ishq in Paris? बस रे बस दोनों का यहाँ पे चाहिएगा सर यहाँ पे ये बहुत ऑफ यू दोनों दोनों सोलो पिक्चर है यहाँ सामने यहाँ पे यहाँ इस कॉर्नर यहाँ पे ट्रेन नहीं है Alright, सोफी मैम एक सोलो पिक्चर Sophie ji center. Sophie center. सोफी मैम
क्यों अभी क्यों से ना फाइट भाग रहे हैं